Hello everyone, this is Pritam Shah and welcome to my YouTube channel CognitiveCoders. So today in this video we'll learn how to read the nested folder structure from a folder. Okay, how to read the files basically from a nested folder structure. So ये basically क्या होता है? Then first we will see what is the nested folder structure. So basically in our DBFS, I have already created few files. In that file, I have placed few data files. Okay, so if I will go to the DBFS, in DBFS there is file store, and in file store there is table, and in a table there is a file I have stored employee details. Okay, once again there is few files in the employee folder. There is one file, and once again there is other file in a 2023. तो 2023 के अंदर भी एक फाइल है, इसके अंदर भी एक एम्प्लॉय के अंदर भी एक फाइल है, और टेबल के अंदर भी एक फाइल है. तो ये सभी फाइल को एक साथ रीड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बेसिकली फॉर रीडिंग वन CSV फाइल व्हाट वी यूज्ड टू डू, we used to read method of Spark session. तो उसको रीड करके हेडर को ट्रू करके ये हम लोग एक फाइल को पढ़ सकते हैं. ठीक है. फॉर रीडिंग मल्टीपल फाइल्स वी नीड टू पास देयर path location in a single list. In this way also we can read the multiple files. Okay, multiple nested files. But for you can see now this is 10 rows. Okay, all the data inserted. Okay, but what is the issue in this one? We need to mention all the files here in a list. Okay, that I don't need to do, that I'm not I don't want to do. तो ये बेसिक इसको हम लोग क्यों करेंगे? तो क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे बार बार करके जाओ, एक एक फाइल को लो, उसके बाद एक एक फाइल स्टोर में जाओ, एक एक फाइल जो है टेबल में, एक एक फाइल को लो, डिटेल्स लो, पाथ लोकेशन लेके यहाँ पे देना पड़ेगा. तो दैट आई डोंट वांट टू डू. ओके, तो ये वाला मेथड, ये लिस्टिंग वाला मेथड मैंने अपना अर्लियर वीडियो में भी दिखाया, वो जाके देख लो वो कैसे मैंने किया. ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग वो. ठीक है, पर ये ऐसे हम लोग करना नहीं चाहते. तो नेस्टेड फाइल को वन एट ए टाइम फुल्ली रीड करना चाहते. तो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, so there is a option during reading some file, that is recursive file lookup. So that option we'll use here. Okay, so for using that we just need first I'll write the option here. Option. Okay, option here it is recursive file lookup. Okay, recursive file lookup option, we need to make it true. Okay, so if I will make it true, then it will I need to just mention here the master file path. Then it will read the whole nested files wherever it is inner the master file. Okay, so basically what I am doing, so basically file store, here table, in a table there are all the files and the other files and also other folders. Okay, तो टेबल के अंदर मुझे टेबल के अंदर तो जाना ही है. उसके बाद एक फाइल है, इसके अंदर एक एम्प्लॉय फोल्डर है, इसके अंदर एक फाइल है. ये सब फाइल को एक साथ पढ़ लेगा. तो बेसिकली मास्टर फोल्डर क्या है? मास्टर फोल्डर है टेबल. तो टेबल तक मुझे कॉपी करके, टेबल का पाथ जो है कॉपी करके मुझे यहाँ पे देना है. तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे दे चुका हूँ. फिर से अगर चाहते हो तो मैं दे देता हूँ. ठीक है, टेबल का फाइल यहाँ पे दे देना है. इसके बाद एक बैकस्लैश दे देना है. ठीक है, सो अभी रिकर्सिव फाइल लुकअप को जब ट्रू कर दिया तो ये पूरा इसके अंदर में जो नेस्टेड फाइल है उसको भी फीड कर लेगा. ठीक है,
now if I will run, now you can see I'm getting 59. Okay, so I'm getting all the files. Okay, so each file contains five data what I have put there. ठीक है, तो अगर मैं इसके एक एक फाइल में जाऊं तो फाइल स्टोर टेबल्स, ठीक है, मेरे पास 3 फाइल क्रिएट होगा, 1 2 और इसके अंदर में 3, सभी सेम फाइल ही रखा हुआ है, ठीक है। तो एक एक फाइल में 5 करके डेटा है, तो यहाँ पे 15 डेटा रीड हो गए। पर अभी समझने के लिए, तो फॉर अंडरस्टैंडिंग the which data is from which file, I'll use one function here for getting the file path of the data। तो वो क्या है, इनपुट फाइल नेम, ठीक है। पार्क में एक फंक्शन है जो कि तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, PySpark डॉट SQL डॉट फंक्शंस, ठीक है। इंपोर्ट, अगर मैं इंपोर्ट करूँ उसको, इनपुट फाइल नेम, ठीक है, ये वाला एक फंक्शन है। तो अगर मैं इसको इनपुट करके एक फिर से मैं एक रो बनाता हूँ, एक कॉलम बनाता हूँ जिसमें फाइल जो जहाँ से डेटा आया है उसका फाइल लोकेशन स्टोर होगा, ठीक है। और वो मैं बनाना चाहता हूँ, तो इसको df डॉट विथ कॉलम, एक नया कॉलम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, विथ कॉलम, देन लोकेशन, उसका नाम दूंगा लोकेशन, फाइल नेम विल बी द लोकेशन, ओके, लोकेशन, एंड उसके बाद व्हाट इट विल बी देयर, इनपुट फाइल नेम, तो इसको यहाँ पे पास कर दो, ठीक है। नाउ यू कैन सी द डेटा। तो ये जो डेटा है हम लोगों के पास, ये पूरा एम्प्लॉय डिटेल्स के अंदर में वो जो टेबल के अंदर में जो एम्प्लॉय डिटेल्स है उसका डेटा है। तो यू कैन सी यहाँ पे टेबल्स के बाद एम्प्लॉय डिटेल्स का डेटा है। इसके बाद जो है ये एम्प्लॉय ईएमपी फोल्डर के अंदर जो एम्प्लॉय डिटेल्स है उसका डेटा है। ईएमपी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है, फाइल है, ईएमपी फाइल के अंदर एक फाइल है, इसका डेटा, और इसका यह ईएमपी फाइल के अंदर 2020 बोल के जो फोल्डर है इसके अंदर में इसका डेटा है, तो वो वाला डेटा देखेंगे। ये ईएमपी फोल्डर के अंदर एक 2022 बोल के फोल्डर है, उसके अंदर में ईएमपी डिटेल्स बोल के एक फोल्डर है, फाइल है, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन गेट द नेस्टेड फाइल्स डेटा in a single way, okay, we don't need to mention the path in a single list, multiple folder path we don't need to mention here, okay, just need to mention the master file path, and then we just need to use this option recursive file lookup, we need to make it true. By default it will be false, okay, we need to make it true, okay. In this way we can read the recursive nested folder structure, okay. Okay, so and also for reading the file location, the data location path, we can use the input file name. So I think you have understood the concept, okay. If you like my video, please do like, share and subscribe my YouTube channel CognitiveCoders. So you guys support is really much required for us to grow this channel, okay. There are lots of video I have uploaded, 58 videos are already there, and I'm still uploading, okay. So in playlist also you will get one Spark and database playlist. There are 53 videos, and in real time scenarios also I'm continuously uploading videos in the real time scenario basis. There are 5 videos already uploaded. Please go and watch it if you are pursuing the data engineering domain, okay. Then it will be very much useful for you guys, okay. So please go and watch this video. It will be very much useful for your data engineering career, okay. So thank you for watching this video, and please share with your friends, and please circulate our channel name with your friends and colleagues, okay.
Thank you very much. Bye.